everyone, welcome back to my channel. Welcome back to another brand new video with me. As you all know, life has become so fast that we didn't get time for ourselves to go in a salon or even cannot call the salon service the home salon service as it's COVID time. So क्या करें, स्किन केयर छोड़ तो नहीं सकते. So I have a solution and this is the magic box which I am talking about, and I have been using this product since 3 weeks and results are mind-blowing. So thought to share my views with you all, and I'm gonna apply the skincare products on my skin. So video को end तक देखें and अच्छी लगे तो share with your family and friends. And अगर आप मेरे चैनल में नए हो then please do subscribe to my channel, hit the bell button, give a thumbs up and share with your family and friends. Now without any further ado, let's go ahead to the video. I think this mCaffeine brand is not a new name for you, and if you are thinking to try these products then this video is only for you. So mCaffeine has a variety combo packs, and this particular box contains mainly these 4 items, which are the face wash, face scrub, face mask and the body scrub. And I have purchased this for my love for coffee, and every product of this combo pack has coffee as they have mentioned in the packaging, and I have been using this since some weeks and I think you should also give this a try. And this video is not a promotional one but a genuine review from my side, and I'll be using all the products on my skin and will share the experience respectively, so stay tuned. So first of all, let's talk about the face wash. It is written it's naked and raw coffee face wash, and skin type भी लिखी हुई है normal to oily skin. On the back it has detailed ingredients names that is used in this formula, and on the cream you can get the manufacturing date and all. It has a plastic pouch tube and its price has 349 rupees. So this is the packaging that you can get, which is really nice, and it has a quantity of 100 ml for this range. Now let's try the face wash first and we'll use rest of the products one by one. And let me show you the color. It has a good brown color, almost like honey, and it's transparent, and the face wash is really very thick. Though it's written on packaging that it is a raw coffee face wash, but coffee की smell बहुत ही ना के बराबर है. And I mean, when you are using a caffeinated skincare range, I would always want it to smell like coffee, but it smells like somewhat like a floral perfume, and it has really a delicate fragrance. It is also written normal to oily skin people can use this, and I have a oily skin and एक दो acne हमेशा ही मुझे आते रहते हैं, so oily skin वाले definitely इसे try करें. And ये वाली face wash I have been using since 2 weeks, and use करने के बाद results इतने अच्छे लगे, and that's why I am with this review today for you now. एंड फेस वॉश को अब अपने हाथों से हल्के हल्के बेसिकली उंगलियों से रोटेटिंग मोशन में घुमाते हुए क्लीन करें, ताकि फेस की जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारे बाहर निकल जाए, एंड स्पेशली साइड्स ऑफ योर नोज एंड चिन एरिया. एंड एज यू कैन सी, दूसरे बाकी फेस वॉश की तरह इसमें झाग नहीं आ रहे हैं, फोम भी नहीं बन रही, विच इज़ रियली गुड एंड इट्स ग्लाइडिंग स्मूथ ऑन माई फेस. नेक्स्ट क्लीन विथ कोल्ड वाटर, एंड धोते टाइम यू विल सी बहुत ही स्मूथ फील होने वाला है, एंड पैड ड्राई जेंटली, एंड बहुत ही सॉफ्टनेस फील हो रही है मेरे स्किन पे. So the second step is scrubbing, and on the front it's written it's a naked raw coffee face scrub, and skin type भी लिखी हुई है normal to oily, and quantity है 100 grams. तो आइए देखते हैं पीछे. सारे ingredients दी हुई है, and price is also same like the face wash, that is 349 rupees. एंड यू कैन गेट ऑल द डायरेक्शन ऑफ यूज टू कि कैसे आपको इसे अप्लाई करनी है. सो लेट्स मूव विद द स्क्रब. फेस वॉश मैंने कर ली है, एंड स्किन को थोड़ा डैम्प रहते ही स्क्रबिंग स्टार्ट करें. नाउ लेट मी शो यू द कलर. इट इज़ ब्राउन ऑल्सो, एंड इसमें अच्छी खासी कॉफ़ी की स्मेल है. एंड यूज़ करने से पहले मैं आपको हाथ में रब करके दिखा देती हूँ इसकी पार्टिकल्स. एंड आई कैन फील द दानेदार कॉफ़ी पार्टिकल्स इन दिस स्क्रब, एंड ज़्यादा ठीक नहीं है लाइक अदर स्क्रब्स. एंड इट हैज़ विटामिन ई, एंड ये मैं नहीं बता रही बट द पैकेजिंग इटसेल्फ सेज दैट इट हैज़ विटामिन ई.
एंड हेयर इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड फॉलो। जब भी आपके स्किन पे कोई एक्टिव एक्ने रहते हैं तो स्क्रबिंग कभी भी ना करें, इट ओनली वर्सन द एक्ने कंडीशन। बट स्क्रबिंग बहुत ज़रूरी है स्किन के लिए, फॉर एक्सफोलिएटिंग, फॉर रिमूविंग द डर्ट एंड द ड्राई स्किन सेल्स। तो स्क्रबिंग करनी है तो एक्ने वाले एरियाज़ को अवॉइड करते हुए उंगलियों से रोटेटिंग मोशन में स्क्रबिंग कर ले। नोज़ के साइड्स अच्छे से करें। एंड ऑयली स्किन है अगर तो आपको व्हाइट हेयर्स आती होगी, एंड ड्राई स्किन वालों की प्रॉब्लम है विद द ब्लैक हेयर्स। जो भी है उसे स्क्रबिंग करके अच्छे से रिमूव कर ले। And as you can see, I am scrubbing the skin on my eyes and lips too, क्योंकि when you use eyeshadow और लिपस्टिक्स एंड फेस वॉश ठीक से ना हो पाए तो मेकअप हमारे स्किन पोर्स को क्लॉग कर देती है एंड मेरे जैसे ऑयली स्किन वालों के लिए एक्ने को दावत देते हैं। सो दैट पार्ट्स ऑल्सो नीड गुड एक्सफोलिएशन एंड 5-6 मिनट्स तक जेंटली स्क्रब कर ले एंड वॉश इट ऑफ विद कोल्ड वाटर। सो आफ्टर डन विद द स्क्रबिंग, मैंने ठंडे पानी से अपनी स्किन को धो लिए है एंड स्किन काफ़ी स्मूथ फील हो रही है, कोई जलन नहीं है एंड हल्की हल्की कॉफ़ी की फ्रेग्रेंस भी है। एंड आई एम यूजिंग दिस स्क्रब सिंस 2 वीक्स ट्वाइस अ वीक। सो या मेरे ऑयली स्किन वाले भाइयों और बहनों, गिव दिस स्क्रब अ ट्राई, it's really good on oily skin. Next is the product that we have, which is my favorite in this range, that is mCaffeine Naked and Raw Coffee Face Mask, and that looks like this, and that comes in a glass jar with a quantity of 100 of grams and also has a wooden spatula with it for easier application, which is really good to provide that. And it has a price of 575 rupees and has manufacturing date and all the details too. Sath hi you will also get the direction of use like other products. And also let me show you, this face mask has marked it for oily skin, unlike the other face wash and face scrub, which is a great thing for people like me having the oily skin. Now let me show you the mask. Oh, it's so tight. So it has a cover and the mask color is something like grey. Now without any delay, let's try it on my face. So I'm gonna use this spatula for easier application and take generous amount of mask. As it's written, you need to use a thick layer of this mask and ज़्यादा पतला पतला ना लगाए। And मैं बता दूँ that mask has also some दानेदार coffee particles in it and I can feel it while I'm applying it on my skin. And this face mask is really very thick face mask and it smells like so much like coffee, like any coffee cake. और जब आप इसे लगाते हो अपने फेस पे, you can feel some cooling sensation on your face. And as I said, कॉफ़ी की दानेदार particles है इसमें, which is also a great thing क्योंकि when you will be washing it off, it will also exfoliate your skin as well. So apply generous amount of this paste on your chin, forehead, nose, except your eye areas, cause mask will be dried up after a certain time and that time it starts pulling your skin. And if you apply face mask too much around of your eyes, it pulls that part skin as well. And you all know eyes has the most delicate skin, तो वहाँ पे wrinkles पड़ने की chances होते हैं और हमें मास्क से wrinkles घटाने हैं ना कि बढ़ाने। तो स्पैचुला, उंगलियों और ब्रश जो भी आप यूज़ करोगे उसे ऊपर की तरफ पुल करके ही मास्क को लगाएं। एंड नाक के वहाँ स्पैचुला यूज़ करने में प्रॉब्लम हो रही थी तो आई हैव यूज्ड माई फिंगर इंस्टेड। नाउ वेट फॉर 20 minutes to absorb the goodness to your skin. Now after waiting for the longest 20 minutes of my life, it's time to wash it off with cold water and now my skin feels so fresh, so smooth. Now pat dry and don't forget to apply any moisturizer that you use daily, cause मास्क लगाने के बाद आपकी स्किन जितने भी स्मूथ क्यों ना फील हो, इट ड्राइज योर स्किन। सो मॉइस्चराइज़र लगाना ज़रूरी है एंड ऑयली स्किन वालों के लिए दिस मास्क इज़ जस्ट ग्रेट। And here completes the face care range with the face wash, face scrub and face mask. And last we are left with this body scrub only, that is mCaffeine Naked and Raw Coffee Body Scrub. And this is the first product which I bought at the very first when mCaffeine was introduced. And trust me, it is the product जिसकी वजह से मैं mCaffeine की ऐसी दीवानी बनी एंड बाकी सारे प्रोडक्ट्स को ट्राई करने के लिए भी enthusiast बनी। And this jar of body scrub would be my fourth one and quantity is 100 gram and normal to oily skin people can use this. And there is the direction of use with elaboration and it is vegan and SLS free and the price is 449 only. And they gave you also a wooden spoon to use this scrub and a cute white towel with threaded mCaffeine.
It's a good range, but body scrub review will be up with another body care range, so I hope you will definitely try this face care range from mCaffeine, and if you have any query you can ask me in comments.